बजे। ओपनिंग जोड़ी बल्लेबाजी के लिए मैदान पर एसके जॉगिंग क्रिकेट टीम की रजत स्ट्राइक एंड पर रजत कुडालकर और उन्हीं के साथ धनेश, ये जोड़ी मैदान पर 8 ओवर का मैच। अंपायर का इशारा शिवशरण और बाबू दाभोलकर, उन्हीं के साथ कुणाल। ये अंपायरों की जोड़ गोली मैदान पर कुणाल के साथ शिवशरण और बाबू दाभोलकर। और पहला ओवर लेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर रमेश बॉलिंग मार्क पर पावर प्ले का ओवर लेकर दूसरा सेमीफाइनल एक और से फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं अमेजिंग कोंकलिम क्रिकेट टीम। शानदार मुकाबला रहा, यादगार मुकाबला रहा और इस गुरुनाथ उसगांव को रुकना पड़ा इस मैदान पर। पहली गेंद यॉर्कर लेन की गेंद, हल्के से खेला गेंद को मिड ऑन पर फील्डर, और जब तक गेंद को आते उठाते फील्ड करते 1 रन के साथ रनों का खाता शुरू किया दोनों बल्लेबाजों ने। सबका मालिक है। सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ रजत कुडालकर का, और सामने धनेश लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सामना करेंगे रमेश की गेंदबाजी का। सेमीफाइनल का दूसरा मैच जो गणपति वॉरियर्स दारबांदोड़ा और एसके जॉगिंग, इन दो टीमों के बीच में। फील्डिंग करती हुई गणपति वॉरियर्स दारबांदोड़ा क्रिकेट टीम हाफ वाले पर लेकर गेंद को खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। 1 रन और मिल गया स्कोर के खाते में, सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 2 पर। 2 ओवर शुरू में पावर प्ले का खेल, बाद में तीसरे से 5वें तक और एक जो ओवर। फुल टॉस गेंद, बढ़िया शॉट, बीचों बीच बल्ले के लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक ऑफ ड्राइव का सुंदर शॉट, गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बढ़िया शॉट, फुल टॉस गेंद पर इस बार बाहरी किनारा लगा, गेंद पर कवर पॉइंट पर फील्डर थोड़ी सी मिस फील्डिंग, 1 रन के लिए निकले, बैकअप हो रहा था फील्डर का और 1 ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ धनेश पहुंचे 5 पर, एक चौके के साथ खुद के व्यक्तिगत। सामने रजत कुडालकर 1 रन पर बल्लेबाजी करते हुए पहला ओवर मैच का चलता हुआ और स्कोर हो चुका है 7 रन बिना किसी नुकसान से। 117 का टोटल, 118 का टारगेट। पहले मैच बड़े टोटल का मुकाबला, लेकिन राहुल ने क्या बल्लेबाजी की, शानदार अर्धशतक। सेमीफाइनल के मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के हीरो। ओवर पिच गेंद, इस बार मिड विकेट पर फील्डर, फील्डर को बीट किया गेंद ने, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। दूसरा चौका पहले ओवर में पावर प्ले के खेल में, एक अच्छी शुरुआत मैदान पर।
ओवर पेस गेंद, क्रैकिंग शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर, एक लंबा शॉट 6 रन के लिए। सेवनटीन विदाउट लॉस, अच्छी शुरुआत इसके जॉगिंग क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी में। अच्छी गेंद, बढ़िया क्रिकेट, बैकफुट पर जाकर हल्के से बल्ले का मुंह खोला, आखिर में एक लेग कट का शॉट, गेंद चली गई वाडिश गली पर, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चौके के साथ स्कोर पहुंचा 21-21 पर स्कोरबोर्ड पर। who made Uza for the FC Goa at the Fatorda Stadium. Introducing Joel Almeida for the first time and on the final day. Joed, sorry. गेंदबाजी में परिवर्तन, उत्तम गेंदबाजी पर खुद का पहला, टीम का दूसरा, पावर प्ले का दूसरा ओवर शुरू होता हुआ। इस बार हाथ छूटा था एक ही हाथ से, जो कि लेकिन गेंद चली गई स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत ही शानदार शुरुआत इसके जॉगिंग क्रिकेट टीम के। सावियर सर, इस टीम ने, दोनों टीमों ने पहला मैच देखा है, 118 का टारगेट चेस हुआ है, तो दोनों टीमों के मन में थोड़ा सा, मैं तो कहूंगा निश्चित रूप से कहीं ना कहीं थोड़ा सा भय हो चुका है। जो बल्लेबाजी में शायद कितने भी रन बनाए, इस विकेट पर सेफ नहीं है, और दोनों टीमों ने पहला मैच जरूर देखा इस सेमीफाइनल का। Ashok ji, the main thing is that the ball is a bit hard. The pitch is nice and hard as well. And the ball is nicely coming onto the bat. So the batsman can really hit across, and play his shots, but you got to connect. This is another short delivery outside the off stump and rightly called a wide. So I was saying the pitch is really a batsman's paradise, as I said. And chasing down 118 is mind-blowing, really marvelous batting. And that Rahul had just changed the game. He took away the game from the opposition. Hot and humid climate. So Asakji, the outfield is also thick and fast. The ball just travels. It's really lightning fast. हल्के से खेला गेंद को स्क्वायर लेग पर, फील्डर जब तक आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, 1 रन बन गए स्कोर के खाते में। सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला मैदान पर जारी। एक ओर से अमेजिंग कंकोलम क्रिकेट टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, दूसरी टीम पक्की होगी। इन दोनों के बीच में कौन होगी? एक ओर से खेल रही है जो कि गणपति वॉरियर्स धारबंदोड़ा क्रिकेट टीम, और दूसरी ओर से एसके जॉगिंग क्रिकेट टीम, मापसा क्रिकेट टीम।
इस बार बहुत बढ़िया कोशिश थी विकेट कीपर की। आवाज तो लगभग सुनाई दी थी, बल्ले से लगी थी, लगभग करीबी मामला था। विकेट कीपर ने भी बढ़िया कोशिश की थी, लेकिन आखिरी पल में गेंद हाथों से छूटी। कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं। स्ट्राइक एंड पर धनेश, नॉन स्ट्राइकर एंड पर रजत कुडालकर और गेंदबाजी के मोर्चे पर रुस्तम खुद का पहला, टीम का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करते हुए। फुल टॉस गेंद इस बार आड़े बल्ले से आगे निकलकर खेला, गेंद को ऑन साइड पर मिड ऑन पर फील्डर सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में तेजी के साथ इस एक रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 29 रन जो ओपनिंग जोड़ी के बीच में मुकाबला जारी। विराट तेंदुलकर हमारे साथ स्कोरिंग की जानकारी, प्रशांत शिरोडकर, सविय सर और मैं अशोक नाइक, आप सभी का स्वागत इस दोपहर के सत्र में। आज का आखिरी दिन, लगातार 5 दिन ये क्रिकेट का टूर्नामेंट आपके साथ चलता रहा इस मैदान पर। बड़ा शॉट, ओवर पिच गेंद इस बार लॉफ्ट किया, गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर दूर है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर। 4 रन के लिए 33। पावर प्ले का इशारा अंपायर का। शुरू का 2 ओवर पावर प्ले का खेल, 1 ओवर बैटिंग पावर प्ले का, और वो ओवर ले रही है ये जोड़ी मैदान पर। दोनों बल्लेबाज रजत कुडालकर और उन्हीं के साथ धनेश, और गेंदबाजी में परिवर्तन दिखाई देता हुआ तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई। सुशांत गेंदबाजी करने के लिए खुद का पहला, टीम का तीसरा। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ 33 रन बिना किसी नुकसान से। एसके जॉगिंग क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर। फील्डिंग को ठीक ठाक करते हुए मैदान पर दिखाई देते हुए गणपति वॉरियर्स दारबंदड़ क्रिकेट टीम टॉस जीता। टॉस जीतकर जो फील्डिंग करती हुई सेमीफाइनल के इस मुकाबले में शॉट ऑफ प्लेन गेंद खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, मिड विकेट पर गेंद, बल्ले में कोई संपर्क नहीं। एक अच्छी गेंद पावर प्ले का, जो कि बैटिंग पावर प्ले का ओवर, और सुशांत पहली डॉट गेंद के साथ अपने बॉलिंग बात पर अगली गेंद लेकर सामने बल्लेबाजी करते हुए रजत कुडालकर, धनेश माफ कीजिए। इस बार देखना होगा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लेकिन मौका नहीं बना फील्डर के लिए। फील्डर के लिए मौका नहीं बना और गेंद चली गई 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर। बल्ले से स्ट्राइक एंड पर फिर से एक बार सामना करते हुए सुशांत की गेंदबाजी का। ओवर पिच गेंद थी, बल्ले पे नहीं लगी, ठीक से बाहरी किनारा लगा, बाद में आकर गेंद पैरों पे टकराई, शरीर पे टकराई, कोई नुकसान नहीं। वही लुढ़कते हुए फील्डर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते और रन की संभावना को समाप्त कर दिया। अच्छी शुरुआत मैदान पर बल्लेबाजी में। 8 ओवर का मैच है,
सामने उतनी ही तगड़ी टीम है गणपति वॉरियर्स दारबंदोड़ा क्रिकेट टीम। इस बार थोड़ा सा गति में परिवर्तन, थोड़ा जल्दी खेल बैठे, स्लो ओवर वन, बल्लेबाज थोड़ा जल्दी खेल बैठे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं और लगातार 2 डॉट गेंदे गेंदबाजी में इस बैटिंग पावर प्ले में गेंदबाज सुशांत की। अच्छी गेंद इस बार, फिर से एक बार यॉर्कर लेन की गेंद हल्के से मोड़ कलाई का उपयोग करके स्क्वायर लेग पर चौकर ने फील्डिंग, गेंद को फील्ड करते कोई रन नहीं स्कोर के खाते में। खेल चलता हुआ तीसरा ओवर का 39 रन, टोटल 39, लगभग 13 रन के साथ रन बनाती हुई मैदान पर एसके जॉगिंग क्रिकेट टीम। बड़ा शॉट इस बार, बढ़िया शॉट, लॉन्ग अप बाउंड्री पर एक फील्डर मौजूद है और जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते 2 रन इसी बीच में पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ से स्कोर हो चुका है टोटल 41। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर के बाद 41 टोटल स्कोर बोर्ड पर बिना किसी नुकसान से। सावे बाब देव बरें करूं तू इंट्रोडक्शन दिला म्हणून, पण हांव एक्सपर्ट कॉमेंटेटर न्हू, हांवें केन्ना लायफान कॉमेंट्री करूं ना, फर्स्ट टाइम मायकार उलयता सद्या क्रिकेट स्टेडियमान। एक्सपर्ट कॉमेंटेटर आसा आमचो बाब प्रशांत। प्रशांत जी, आपका कॉमेंट्री पहले दिन से सुन रहा हूं मैं। अशोक जी आप सॉरी अशोक जी, आपकी कमेंट्री में पहले दिन से सुन रहा हूं। सरफराज की शानदार सेंचुरी और आपकी दमदार कमेंट्री पहले दिन से अशोक और प्रशांत जी दोनों की दमदार कमेंट्री सुन रहा था, और सावियो जी ऑफ कोर्स। बेहतरीन शॉट ऑफ साइड पर, एक्स्ट्रा कवर पर, कमेंट्री बॉक्स के सामने उतनी ही शानदार फील्डिंग और विकेटों के बीच में बहुत ही अच्छी दौड़। 2 रन जुड़ गए स्कोर के खाते में और इन 2 रन के साथ से स्कोर हो चुका है 43 रन 43। ओपनिंग जोड़ी के बीच में एक बढ़िया साझेदारी मैदान पर। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, रामदास गेंदबाजी कर रहे हैं। चौथा ओवर 8 ओवर का मैच है। ओपनिंग जोड़ी रजत कुडालकर और उन्हीं के साथ धनेश, लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर, ये कॉम्बिनेशन मैदान पर, और रामदास बॉलिंग मार्ग पर। छोटी गेंद इस बार, खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, एक पुल करना चाहते थे, पुल सक्सेस नहीं रहा, गेंद चली गई विकेट कीपर। ऑन साइड पर डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, ऑफ साइड पर एक लॉन्ग अप बाउंड्री पर फील्डर है। बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने लगभग डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर भी फील्डर है, तो 5 फील्डर है तैनात सीमारिका पर। लेकिन जो बिल्कुल गणपति वॉरियर्स का इरादा था टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का, जल्द से जल्द 1-2 विकेट लेने का, अब तक कोई सफलता हाथों में नहीं मिलती हुई। इस बार कारपेट के साथ मिडऑन पर फील्डर गेंद को थ्रो किया था, अगर गेंद स्टंपों पे लगती तो शायद थर्ड अंपायर के लिए जरूर कॉल होता। बिल्कुल करीबी मामला था, अच्छी फील्डिंग लेकिन अपने पॉपिंग क्रीज में बिल्कुल सुरक्षित। रजत कुडालकर स्ट्राइक पर, धनेश नॉन स्ट्राइकर एंड पर। एक अच्छा ओवर चलता हुआ खेल जारी चौथे ओवर का। रामदास बढ़िया शॉट, गेंद हवा में कवर पॉइंट पर, फील्डर को मौका नहीं बना। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। बढ़िया शॉट इस बार, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद मिली, स्क्वायर कट किया, बहुत ही लाजवाब टाइमिंग। फील्डर जरूर मौजूद था लेकिन उनको हिलने का मौका भी नहीं दिया बल्लेबाज ने फील्डर को। 4 बहुमूल्य रन और स्कोर के खाते में। A warm welcome to our MLA of Margam, Sri Digambar Kamath. I request our President, Mr. Damodar Shirodkar,
to kindly escort Sir to the stage. Thank you. थैंक यू सर, सावियो सर, धन्यवाद। और एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, और इस सिंगल के साथ रजत कुडालकर और उन्हीं के साथ धनेश, ये ओपनिंग जोड़ी एसके जॉगिंग क्रिकेट टीम जो पहले बल्लेबाजी करते हुए, और गणपति और ये दारबादोड़ा क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला, और एसके जॉगिंग मापसा क्रिकेट टीम को जो बल्लेबाजी को मौका दिया। आधे ओवरों का खेल समाप्त हुआ, 12 रन के साथ रन बना रही है एसके जॉगिंग क्रिकेट टीम। टीम का टोटल स्कोर 48 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन, और एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में सर सावियो के साथ जुड़ जाते हैं। 48 SK jogging, na? SK jogging batting. Sushant bowler. Oh, 50. Perfect shot. Huge one into the crowd. And with the 6, the score moves on to 50. It's 54 without loss. What a start to the second semi-final. Judd or some साव्यो म्हाका खूब बरें दिसता कोस्टा ग्राउंड अशें फुटबॉल आनी क्रिकेट खेळटा म्हणून पयलीं हांवें आयकलेलें बिल्डींग कितें घालपालें म्हणून तें बंद करून सद्या आमी स्पोर्ट्स खेळटा कोस्टा ग्राउंडार, तें बरें दिसता। आनी ताका लागून आय थिंक वी शूड ऑल्सो बी ग्रेटफूल टू आमचो MLA दिगंबर बाब फॉर सपोर्टिंग स्पोर्ट्स, एंड दैट्स अ गुड कैच एट द बाउंड्री। अशोक जी, आपको क्या लगता है, मैंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस देखे पूरी सीरीज में जो टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ पे, बॉलिंग परफॉर्मेंसेस अच्छे थे, बैटिंग परफॉर्मेंसेस भी अच्छे थे, मगर मैन ऑफ द सीरीज आपको आपके हिसाब से किसे जाना चाहिए? आज सर थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, क्योंकि मैं कल से ही हूँ, लेकिन इस टूर्नामेंट में जिस तरह से खेल हुआ है, मैं तो कहूँगा सुबह के 17 में सेमीफाइनल का मैच सवे सर जो राहुल की बल्लेबाजी रही है, क्या बल्लेबाजी रही राहुल की, बहुत ही शानदार। अखिल ने क्या साथ दिया है, शायद कैच छूटा है जरूर, लेकिन कैच छूटे उन्होंने क्या शानदार बल्लेबाजी की है। और इसके जॉगिंग की मैं बात करूंगा, एकमात्र ऐसा खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में जिसने गेंदबाजी में मैन ऑफ द मैच का हकदार रहे, राकू कोरगांवकर, राकेश के नाम से जाना जाता है, और 5 विकेट लिए मैच में। सर 5 विकेट मैच में, मैं तो कहूंगा वो 100 के बराबर कामगिरी है। जब बल्लेबाज सेंचुरी लगाता है तो हम तारीफ करते हैं, लेकिन अगर अपने गेंदबाजी में अगर 5 विकेट ले तो इससे बढ़िया क्या प्रदर्शन होगा। बिल्कुल सही है। और हमारे विराज तेंदुलकर तो स्कोरर, वो भी जानकारी दे रहे, रुत्तम ने भी 5 विकेट लिए हैं, और रमेश ने भी। तो गेंदबाजी में जिस विकेट पर हम बात कर रहे हैं, जो कि छोटी बाउंड्री है, अच्छा पिच क्यूरेटर ने बैटिंग विकेट बनाया है, लेकिन ऐसे विकेट पर सभी सर गेंदबाजों ने भी बिल्कुल अपना जो कि करिश्मा दिखाया है, बिल्कुल शानदार गेंदबाजी की है। एब्सोल्युटली। बोलो सर, यार कर बॉल। आपने सही बोला, जैसे सावियो भी बता रहे थे कि बैट्समैन पैराडाइज पे विकेट्स लेना इतना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। That's 6 runs. Beautiful flick in the leg side. आणि तो राकेश कोरगांवकर मुंडा तो 9 विकेट काढला त्याने 3 गेमीन, which is an excellent achievement by itself on this batsman's paradise. हेलो, कोण रे बॉलर, कोण मॅच बघतोय? सुशांत, अरे वाह वाह, बघ 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 बघ। Then we have another youngster, a very talented youngster who's keeping the wickets, Sahil, and Ganpati Warriors. So we have a lot of talent in this teams that performed here. The penultimate over, the 5th over to be bowled by Sushant. Beautiful fielding. Not the penultimate over, of course. This is the semi-final, so it's an 8-over match.
Ashok ji, back to you. व्हाइट बॉल का इशारा। और सावियो सर ये सब जानकारी देते हैं हमें ना, वो स्कोरर देता है। बिल्कुल बढ़िया स्कोरर है विराज तेंदुलकर। Viraj, great job. कई नाम है स्कोरर के, जरूर। छोटी गेंद इस बार कट किया, कवर पर फील्डर, रन आउट का खतरा, लेकिन थ्रो गलत जगह पर। बिल्कुल नॉन स्ट्राइकर पे इन पर थ्रो होना चाहिए था, विकेट कीपर के पास वो भी ओवर थ्रो हो गया। और टोटल मिलेंगे स्कोर में 2 रन। 2 रन मिले स्कोर में। जो डिक्लेयर एरिया था वहीं पर गेंद निकली थी, दीवार पर जाकर गेंद टकराई थी, तो 2 रन मिले स्कोर के खाते में। सभी सर हम स्कोरर की चर्चा कर रहे थे, विराज तेंदुलकर। मैं और एक नाम, 2 नाम लूंगा, उमेश आसगांवकर जो पंजिम के, उन्हें हमें भाऊ कहते हैं। राजकपूर ट्रॉफी में जो गोवा के 2 खिलाड़ी आज तक खेले, दिनेश नाइक और उमेश आसगांवकर, और वो बिल्कुल बढ़िया स्कोरिंग करते हैं पंजिम में। और एक स्कोरर है जो कि अखिल परब, जो पेडनेम तालुके के बिल्कुल बढ़िया स्कोरर, हम उन्हें कंप्यूटर स्कोरर के साथ जो कि बिल्कुल नाम लेते हैं उनका, अखिल परब का। बिल्कुल पूरी जानकारी जो कि खिलाड़ियों के बारे में देता है। तो ये स्कोरर की भूमिका है। मैदान पर खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ, खेल समाप्त होता हुआ 5वें ओवर का, और 5 ओवर के बाद एक बढ़िया शुरुआत। एकमात्र विकेट रजत कुडालकर 33 पर आउट होकर वापस। शुभम झा नए बल्लेबाज आ चुके हैं और स्कोर हो चुका है 64। टोटल 64 रन 1 विकेट पर। जुड़ जाते हैं सावियो सर के साथ। 5 ओवर। Danish and wo? Shubham. Ramdas with a new over from the Costa Road end. Dinesh on strike. Short ball and gets the treatment. 6 runs. बॉल पावो आशिल्ले सारके कॉमेंट्री बॉक्सान, पूण कॉमेंट्री बॉक्सा वयल्यान. And that was the 6th of the bat of Dinesh. With the 6th, the score moves on to 70. Ramdas dropping it short once again from the Costa Road end. Another short delivery and a similar shot, but this time towards the Pandal, over the Pandal. So 2 consecutive sixes by Danish. Score moves on to 76. DJ, can you get some? पयली दिसा हांवें पयले 3 ते 4 6 कितें सरफराजान मारले ते 1 ओवरीन. सध्या 2 6 2 बॉलान. A good comeback there from Ramdas. But nevertheless, the batsman crossover for a single. So 1 more to the total. Score moves on to 77. SK Jogging batting first in this second semi-final of this tournament against Ganpati Warriors. Ramdas once again, and this time a nice looking delivery outside the off stump. Shubham trying to drive him on the up, misses, taken by the keeper Sahil, and back to the bowler.
Ramdas coming back nicely after those two big hits. Once again, overpitched, driven but in the declare zone for a single. Thick edge over the slips cordon. Exactly onto the banner of the Aquem Socio-Cultural Welfare Association. I don't think it's not a joke to organize a tournament, a 5-day tournament like this. So congratulations to all the organizers as well. Meantime, overpitched and handsomely into the crowd. Sheer timing once again from Shubham this time. 84. The score moves on to 84 for the loss of 1 wicket. SK Jogging batting first. What's the second semi-final of this tournament? DJ. गोवा के गलियों में यहाँ पे पैदा होते हैं बादशाह क्रिकेट की और यहाँ पे फिलहाल कोस्टा ग्राउंड पे कौन बनेगा अगला बादशाह Meantime, another one over the commentator's box. Danesh batting on a splendid 45 at the crease. The left-hander has really struck some big blows. Overpitched once again, and this time he's bowled round the legs. Nice delivery and a brilliant comeback by the bowler. So another wicket, the second wicket down for SK Jogging. Score is 90 for the loss of 2 wickets. Keeps you going, and these oldies that he's been playing, the DJ Apul, he's done a great job. He's played some lovely oldies of the 70s and 60s. Retro. The retro as well. So all the mixture and little of this and little of that combination, it really freshens up your mind and keeps you going, you know. And, especially in this heat. Yeah, you're right, because we are having such a lovely, hot and humid climate. So the 7th over coming up. In the middle of the 7th over, Ramesh bowling in to the batsman. Short delivery lifting outside the off stump. Batsman trying to hit him out of the ground, but just misses contact. So the dot delivery, some nice bowling and good comeback from this bowler. On this wicket, you have to be really disciplined or else you'll go for runs. This time, pitch on the legs. And another one over the commentator's box. Huge 6.
mark hole, but nicely played there by Ajay. And meantime, the throw comes in from the boundary. The crossover for a single. So one more to the total. Score moves on to 97. Sadhya Ramesh, last ball Galbajo of the 7th over. Score as Sadhya 97. आणि 3 रन आणि 100 रन. हे बॉलान जावतले जावचे ना आता आमी पळतले. हो बॉल सद्या वयर गेला आणि ताका पोर्चुगीज पासपोर्ट दिवन भायर धाडला समतो पोर्चुगलार. Joyed, earlier, the first semi-final was also very, what should I say, target of 118, where the opposition came back and took the team to the finals. They really batted like, there was some of the innings that this Rahul played was splendid to watch him. Sheer timing and as many as 6 sixes around the park. So he was really brilliant in his innings. And brilliant to watch him. So anything even around that same total around 120 is gettable. And yeah, I've been seeing some of those scores being chased down as well, whether it's the IPL, the T20 and here as well at this tournament organized by the Aquem Scw Cultural Welfare Association. The final over to be bowled by Kanraj. Hitting it into the leg side. Don't run, try करपा गेल्लो batsman, पण फुत्तून गेलो. .104 with 5 balls to go in the final over of this second semi-final. And this has gone high up in the air. Catch to be taken very comfortably by the fielder. For the Ayla Cruiser, of course, at the opposite side, Siddesh Gadegar. Ajay batting right now. Demand यहाँ पे fielder की no ball के लिए मगर umpire की और umpire ने no ball दे दी. Above waist high, no ball. थर्ड एम्पायर की जरूरत यहाँ पे. So Joyed, I was talking about the chase. Joyed, speaking about the outfield, it's lightning fast. The ball, if crosses the fielders, it just races to the boundary. Absolutely. I think there should be a, even though the outfield is lightning fast, maybe in the coming future years, do you see a lawn being put on this Costa ground? Hopefully, we all will be hoping for that. That's the need of the hour, I would say. And hopefully,
we could see something like this and change the No ball. whole complexion of the ground. Absolutely. Looking forward to that. That was declared as a no ball by the third umpire. And the So- score is 1-0-6. Free hit. Siddesh Dwara ek single which takes the score to 1-0-7. आणि सध्या आसा 3 बॉल हे लास्ट ओव्हरीन अजय आसा स्ट्रायकर तेका जाय आसतले आतां शुअर भायर मारपाक ओवर द बाउंड्री अजयन बॉल सोडले डिमांड आसा तेजो वायडाक पूण एम्पायर रेडी ना वायट दिवपा And there's some good fielding at the boundary. एकशे आठ score आसा सध्या with one ball to go. Savi, what do you make of this? Do you think it's going to go over the boundary or will it be a wicket? Or will it be a single? What's your prediction? I think it could be over a boundary because he's looking for runs and this guy can strike the ball well. That's it. Nice And- placing. And your prediction absolutely spot on, Savio. So with the boundary, they finished the innings. SK jogging. So end of SK Jogging's batting innings, and they have managed to score 112 runs. So Ganpati Warriors require 113 to win the match. सध्या असं आमचे फर्स्ट सेमीफायनलचे कोण पिड्ड्या जाले गेम गुरुनाथ वॉरियर्स फ्रॉम उसगांव तेमकां अवॉर्ड दिवपा मागता आमचो मोलादीक सिराज बायान जायत त्रास केले टोर्नामेंट करपाक तेकाय वालोर तुमी सगळ्यांनी मोट्टाने ताली मारूचे सिराज बायाक
captain is already here. And there are some more players coming in. So probably for the finals. No, we were expecting him actually, Rahul KP. He plays for Kerala Blasters, but he had to go for a photo shoot to Dubai, so he had to fly last moment for that. So we could not have him here. And yet to begin, both the openers at the crease, Sahil and Ramdas. And to take you through the further comments of in Hindi, my co-commentator Ashok ji. राकेश कोरगांवकर गेंदबाजी के मोर्चे पर पहले ओवर में एक अच्छा टोटल है। पहला मैच था 118 का टारगेट, ये टारगेट है 113 रनों का। और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर साहिल और साहिल के साथ रामदास। Rakesh, one of the very good performer in this tournament. Once again here in the semi-finals to bowl the first over. फुल टॉस गेंद, हल्के से मोड़ा, रन आउट का खतरा हो सकता था, हल्का सा अपील, लेकिन बिल्कुल चौकरनी निगाह कुणाल और उन्हीं के साथ शिवशरण और बाबू दाभोलकर। एक अच्छा टोटल है। पहला मैच 118 का टोटल चेस हुआ। अमेजिंग कुंकलिम क्रिकेट टीम ने बहुत ही ओपनर बल्लेबाजों ने क्या कमाल की मैदान पर शानदार बल्लेबाजी की। पहले विकेट के बीच में बड़ी साझेदारी और मैच को जीता लिया। बड़ा शॉट स्लॉग सेप का मिड विकेट बाउंड्री पर एक बिल्कुल शानदार शॉट। गेंद चली गई सीमारेखा से बाहर 6 रन के लिए। बल्लेबाजी में स्ट्राइक एंड पर साहिल और नॉन स्ट्राइकर एंड पर रामदास। राकेश कोरगांवकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार फुल टॉस गेंद, थोड़ा सा हवा में गेंद थी स्क्वायर लेग पर, फील्डर मौजूद, गेंद थोड़ी सी आगे गिरी, बाल बाल बचे वहां पर। बल्लेबाज अगल बगल में खेलते तो 4 रन भी बन सकते थे, लेकिन शायद और थोड़ा सा जो अगर दूर निकलती तो कैच का भी मौका बन सकता था। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। साहिल स्ट्राइक पर, राकेश कोरगांवकर अपने बॉलिंग मार्ग पर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैटर है रामदास जो सामना करते हुए। इस बार खराब गेंद, फुल टॉस गेंद, सिर्फ इस बार दिशा दी, घुमा दिया गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। और एक बड़ा शॉट जो कि बल्लेबाजी में निकलता हुआ। पावर प्ले का ओवर जारी और पावर प्ले में दूसरा बड़ा शॉट बल्लेबाज साहिल के बल्लेबाजी से। Raju, can you get us? बिल्कुल हमारे कैमरामैन वो भी बिल्कुल हमारा साथ दे रहे हैं। साजू AB25, अपुल भी बिल्कुल हमारे जो कि डीजे मैन, और हमारे दूसरे जो कि कैमरामैन है अश्वेत। Yeah, he's at the entrance of the ground, and you can watch us on YouTube, AB25. Meanwhile, Rakesh losing his concentration. In the previous matches, he was very tight in his bowling, well disciplined, but today is slightly off, going for some runs. This time another short delivery, nicely played there in the fine leg region for a boundary. So going for some runs is Rakesh Koorgaonkar. And with this boundary, the score moves on to 16. Chasing
a stiff target of 112. Sorry, 113 to get for Ganpati Warriors. They're 16 without loss. DJ. मुरगांवकर थोड़ा सा महंगे साबित हो रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर पावर प्ले का ओवर, पहला ओवर मैच का चलता हुआ मैदान पर। इस बार आगे निकलकर खेलना चाहते थे, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद थी, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया, शुभम झा, और पहले ओवर का खेल जो कि मैदान पर समाप्त होता हुआ। एक अच्छी शुरुआत मैदान पर सामने बल्लेबाजी करते हुए गणपति वॉरियर्स धारबादोड़ा क्रिकेट टीम 113 रनों का टारगेट के जवाब देते हुए पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 16 रन बिना किसी नुकसान से। पहले ओवर का 16 स्कोर, पावर प्ले का दूसरा ओवर और बॉलिंग मार्ग पर रजत प्रजोत गेंदबाजी करते हुए, सामने रामदास उनके गेंदबाजी का सामना करेंगे। फुल टॉस गेंद, फिर से इस बार सिर्फ दिशा दी, घुमा दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, गेंद निकलती हुई 6 रन के लिए। आगे बढ़ा 22 रन पर, 22 विदाउट लॉस। पहला बड़ा शॉट रामदास के बल्लेबाजी में, सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पर 2 छक्के, 16 पर खुद के व्यक्तिगत स्टाइल बल्लेबाजी करते हुए अगली गेंद लेकर सामने रामदास उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए, बहुत अच्छी शुरुआत मैच में, 113 रनों का टारगेट। अच्छी गेंद इस बार, एक यॉर्कर लेन की गेंद, सम्मानजनक खेला, कवर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते और रन की इस बार कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी। दूर दूर जमाई गई फील्ड, दोपहर के सत्र में उपस्थित सभी दर्शक, मैदान पर सभी क्रिकेट प्रेमी और मान्यवर कक्ष में सम्माननीय अतिथि, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। बढ़िया शॉट, बल्ले के बीचों बीच इस बार ऑफसाइड पर, और जब तक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया इसी बीच में दोनों बल्लेबाजों ने। पहली गेंद पर बड़ा शॉट, बाद में एक डॉट गेंद, फिर से एक सिंगल जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। प्रजोत रेटम ओवर द विकेट, 8-10 कदमों का छोटा रनअप अपने बॉलिंग मार्ग पर। अगली गेंद लेकर सामने बल्लेबाजी करते हुए
रामदास इस बार अक्रॉस द लाइन आड़े बल्ले से खेला गेंद को ऑन साइड पर, फिर से सिंगल शॉट मिड विकेट पर, फील्डर गेंद को फील्ड करते, 1 रन और मिला स्कोर के खाते में। रामदास और रामदास के साथ ओपनिंग जोड़ी में बल्लेबाजी करते हुए साहिल। अच्छी शुरुआत मैच में, मुकाबला दूसरा सेमीफाइनल का मैच, गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा और उन्हीं के साथ एसके जॉगिंग क्रिकेट टीम। स्कोर बढ़िया शॉट इस बार, फिर से सिंगल, क्या गेंद निकलेगी मिड विकेट बाउंड्री पर, फील्डर 1 रन दूसरे के लिए निकले, थ्रो पहुंचा, ओ बिल्कुल अच्छा थ्रो, शानदार थ्रो। अगर सीधा गेंद स्टंपों पे लगती, डायरेक्ट हिट होती तो लगभग हमारे वामन सर को बिल्कुल जो कि तीसरे अंपायर की ओर जो कि नीचे तरफ से देखना पड़ता। 2 रन जुड़ गए स्कोर के खाते में, 26 रन टोटल, 26। खेल जारी दूसरे ओवर का और टारगेट मैच को जीतने का 113 रनों का, 113। तेज गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, थोड़ा सा अपना लाइन पर भटके, एक अतिरिक्त रन वाइड बॉल के साथ 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 27 रन पर। इस बार फिर से बाहर ऑफ स्टंप से, लगातार थोड़ी सी परेशानी गेंदबाजी में प्रजोत दिखाई देते हुए ऑफ स्टंप पर और एक जो कि दिशाहीन गेंद और वाइड बॉल के साथ और 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। 28 पर पहुंचा, बड़े टोटल का मुकाबला है, पहला मैच भी सेमीफाइनल का, एक बड़ा स्कोर हुआ था, 118 रनों का टारगेट जो चेस हुआ इस मैदान पर। इस बार सिंगल मिलेगा स्कोर में, मिडऑन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, फिर से 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। खेल 2 ओवर का जो शुरू का पावर प्ले का खेल, आने वाला 1 ओवर और बैटिंग पावर प्ले का ओवर जो तीसरे से 5वें तक, पहले ओवर में टोटल था 16 रन, अब बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर का, तो तीसरा ओवर जो होगा बैटिंग पावर प्ले का, और सवियसर 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 29 विदाउट लॉस। He'll be bowling to Sahil. Nicely bowled. And the trying to york the batsman. Sahil trying to place him in the offside. Misses completely. Attacking the off stick. Once again a low full toss this time. And a slight misfielding there, overthrows, so which results in a single. So 1 more to the total. Score moves on to 30. Going at the rate of 10 runs per over. 30. Ramdas this time drives. Misfield there, ball running towards the boundary, cut off on the boundary line by the fielder. And meantime, they cross over for a single. A slight hesitation by the 2 batsmen for a second run, but succeeded in taking only a single. So 1 more to the total. 31.
Overpitched and driven handsomely into the crowd. This is Sahil. In the earlier match we had Rahul, who chased down the huge total of 118. This time to the leg side cordon once again, another six. So 2 consecutive sixes for Sahil. As to drops his line and length shot or a whole full toss. Once again, here is Danesh. Over pitch once again, driven in the offside cordon and a slight misfield there. The square leg region, and meantime the throw comes in. A single been taken. So one more to the total and the score moves on to 44. So at the completion of the third over, chasing 113, Ganpati Warriors have managed to score 44 without loss. DJ. So after a small discussion from the fielding side and a water break, they're back. Fourth over coming up from the Costa Road end and will be bowled by Prajot. Prajot to bowl to Sahil, who's looking to score. And as they have a stiff target in front of them, a stiff target of 113 to chase. Over pitch, but way outside the off stump and rightly called wide by the umpire. So one more to the total. Score moves on to 45. 45. Ganpati Warriors. Lovely little bowling there. York team. Sahil totally bitten by this delivery. But lucky, didn't lose his wicket. Sahil once again to face Prajot. Another little over pitch delivery, and this time plays it nicely over the top for 4 runs. Lovely timing once again by Sahil. Prajot slightly over pitching and driven nicely over the infielders for a boundary. Score moves on to 49.
Fourth over in progress, being bowled by Prajot. Once again, Sahil getting ready to take strike. Prajot once again from his bowling mark. Overpitched once again and gets the treatment. What a shot on the leg stick and straight into the crowd for another 6. TJ. Well, Prajot going for some runs. Informed batsman Sahil once again. This time losing concentration and bowls way wide outside the off stump. Another wide delivery. So one more in the form of extras, one more to the total. Score moves on to 56, chasing a target of 113. Ganpati Warriors. Overpitched and a nice short arm jab, but just for a single. Nicely played there, but only success in getting a single. So one more to the total, 57. Fourth over in progress. Prajot. A little expensive in this over. Another overpitch delivery, but this time Ramdas plays it back to Prajot. No run scored. So last delivery coming of the fourth over from Prajot. Where they went after him, especially Sahil. This time Ramdas tries to, goes for a big he and misses. End of the over, end of 4 overs. And at the end of 4 overs, Ganpati Warriors chasing a target of 113 have managed to score 57 runs and without losing a wicket. आधा स्कोर बन चुका है मैदान पर, आधा स्कोर अभी भी बाकी, स्कोर हो चुका है 57, चाहिए 56 आने वाले 4 ओवर में। लेकिन गणपति वॉरियर्स धारबांधोड़ा की मैं कहूँगा अच्छी बात है कि विकेट सेफ है हाथों में, अब तक विकेट नहीं खोया है। और इसके जॉगिंग की अगर परेशानी है, आपको 1-2 विकेट लेनी पड़ेगी मैच में कमबैक करने के लिए। Correct, that's right. If you want to win the match, you got to take early wickets. If not, the batsman will take the game away from you. And in the earlier semi-final, we saw the same thing happening. It was Rahul who took the game away from the opposition. Overpitched once again, driven into the gap, but there's a fielder there. Comes in, picks up. Sahil wanted a second, but Ramdas was not interested.
Lucky escape for Sahil to get back to his crease. So no damage done. Ganpati Warriors in search of runs. Ramdas once again. Full toss and Ramdas pulls him handsomely into the crowd for another 6. There was a slight attempt there on the boundary, but nevertheless the ball deceived him. Fielder trying to catch him on the boundary. So Ramdas gets a 6. And the score moves on to 64. Ganpati Warriors chasing target of 113. Second semi-final. Another overpitched, and this time driven. Again, the fielder comes in, throws in, and meantime, the crossover for another single. So the bowler is really going for runs. Sahil this time beautifully driven towards the leg side and equally well fielded there on the boundary. And meantime, the throw comes in, the crossover for another single. With the single, the score moves on to 66. 5th over in progress. Now it will be Ramdas to take strike. Overpitched once again. Ramdas drives, misses. And the keeper misses. So one more taken in the form of byes. Score moves on to 67 with this single. Danesh once again. Another shot lifting delivery outside the off stamp and way outside the off stamp. Rightly called wide by the umpire. So one more to the total in the form of extras. And the score moves on to 68. Overpitched. And this time they run for another single, but it's a wide declared by the umpire. So 2 to the total. Score moves on to 70. Both the openers still at the crease. Danish once again. Overpitched and handsomely struck. Another beautiful shot by Ramdas for a 6. कि 18 गेंदों का और 18 गेंदों में मैच को जीतने के लिए 18 बॉल्स 37 रन मैच को जीतने के लिए क्या शुरुआत मैदान पर ओपनिंग जोड़ी के शानदार बल्लेबाजी साहिल के साथ रामदास। शायद अगर पिछले मैच की बात करेंगे तो लगभग 5 कैच भी छूटे थे, लेकिन इस मैच में शायद वो भी मौका बिल्कुल मुश्किल दिखाई देता हुआ। फिलहाल देखना होगा गेंदबाजी में परिवर्तन, बॉलिंग मार्ग पर शुभम झा दिखाई देते हुए टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज वो, और देखना होगा इस ओवर में अगर 1-2 विकेट मिले तो कमबैक हो जाएगा, अगर 2-3 शॉट लगे तो मुकाबला 60-40 का हो जाएगा मैदान पर।
36 पर खुद के व्यक्तिगत साहिल बल्लेबाजी करते हुए, रामदास उनका साथ देते हुए 4 छक्के 1 चौका। साहिल के बल्लेबाजी में अब तक 4 छक्के और शुभम झा अपने बॉलिंग मार्ग पर। छोटी गेंद इस बार कट के ऑफसाइड पर, कवर पर फील्डर एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड करते, 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। 17 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और मैच को जीतने के लिए 36 रन, 17 बॉल्स 36 रन। सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला, कड़ी धूप, सूरज माथे पर, गर्मी का मौसम और मैदान पर सेमीफाइनल का मैच। घुमा दिया इस बार ऑन साइड पर, फाइन लेग पर, डिक्लेयर जोन में गेंद सिंगल बना। स्कोर में 35 रन अभी भी स्कोर में जीतने के लिए और आने वाले 16 गेंदों का खेल बाकी। 16 गेंदों में 35 रन। शुभम झा गेंदबाजी कर रहे, राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। बड़ा शॉट, ओवर पिच गेंद, गेंद खड़ी हो गई, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, ओ लेकिन गेंद 2 फील्डर के बीच में। देखना होगा अंपायर का इशारा। सीमा रेखा से बाहर गेंद, 6 रन के लिए। उनतीस रन, आने वाले 15 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। छोटी गेंद और शॉर्ट अंपल का शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, बैक टू बैक दूसरा छक्का। 23 रन, 23 रन्स अभी भी इस विकेट की हम बात कर रहे हैं। ओवर पिच गेंद, शॉर्ट पिच गेंद है, आपको जरूर उस गेंदों पर बड़े शॉट देखने को मिलेंगे। और वही बात मैदान पर, लगातार 2 छक्के बल्लेबाजी में रामदास स्ट्राइक एंड पर 44 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए। स्कोर हो चुका है टोटल 90 रन। अभी भी चाहिए 23 रन मैच को जीतने के लिए और आने वाले 14 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। रामदास 44 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए, ये 2 गेंदें काफी निर्णायक है शुभम झा की। अगर ये 2 गेंदों पर विकेट मिले या डॉट गेंदें निकालने में सफल रहे तो 7वां और 8वां ओवर मैच बाकी रहेगा। बड़ा शॉट, शॉर्ट आर्म पुल का, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद, सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। मुकाबला रहा पहला मैच, 118 का टोटल। ये इस बार और एक बड़ा शॉट, हवाई फायर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, 6 रन के लिए। सर क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? चौके छक्के की बिल्कुल बौछार हो रही है मैदान पर। वही यार, कनेक्शन, टाइमिंग, रामदास क्या बात है, वाओ। टाइमिंग तो बहुत बिल्कुल लाजवाब सर। 100%, yeah, that was great timing from Ramdas. 6 ओवर का सर खेल समाप्त हुआ और 6 ओवर के बाद टोटल हो चुका है 102 रन। 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और मैच को जीतने के लिए 11 रन। Such simple equation like the first match, हम लोग ने देखा कि Rahul was brilliant in his batting, and here also without losing a wicket, as I just said, Ashok ji, ये तो wicket ही ऐसी है, you can stand and deliver. If the ball is over pitched, you can connect, and if you connect it well. Rakesh Korgaonkar to bowl his second over from the short ball, pulled and
into the declare zone for a single by Sahil. So one more to the total. Needing just just 10 more runs to get. What a shot in the offside cordon. Fielder getting underneath and a brilliant catch there. Right on the boundary. Good judgment by the fielder and a brilliant innings of Sahil comes to an end. Well played, Sahil. कुरगांवकर गेंदबाजी पर सभी सर अब चमत्कार ही बचा सकता है इस मैच को और वो चमत्कार राकेश कुरगांवकर को करना पड़ेगा। बढ़िया शॉट, गेंद हवा में, कवर पर मौका कैच का, ये कैच का मौका था, पकड़ लेना चाहिए था, ये कैच तो था दोस्तों, ये कैच छूटा और 2 रन भी बन गए स्कोर में। बिल्कुल ऐसे समय पर कैच छूटा, सभी सर मैं तो कहूंगा ये मौका था कैच का। Yes, very much. क्योंकि आप This is pressure situation. बिल्कुल आप सेमीफाइनल का मैच खेल रहे, बड़े टूर्नामेंट में खेल रहे, तो ये कैच आपको पकड़ना ही चाहिए था। Only catches can win matches. And it's a pressure situation. Rakesh once again. Trying to yoke the batsman, but still Ramdas, who's in great touch, manages to take a single. 7 more runs to get for the Ganpati Warriors. And Vijay, the new man in. Vijay drives him all along the ground. Fielder coming in from long off, picks up, throws in. But not before Vijay opens his account. So a brilliant innings comes to an end of the previous over of Sahil after scoring 38 runs. Here another he and misses contact. Ramdas trying to finish the game quickly. Misses contact. End of the over. End of Rakesh's second over. सर मैच आखिरी ओवर पर आ गया, अंतिम ओवर का खेल, बाकी 6 गेंदों का और मैच को जीतने के लिए 6 रन। That's exactly what I said in the earlier statement of mine. In cricket, till the last ball is bowled, you can never say. It's anybody's game. And if you're going to drop the catches, you can't win matches. Six balls and और सिराज भाई डीजे को हम बहुत धन्यवाद देंगे, क्या बिल्कुल सुंदर गीत सुनाए, हम भी खुश हो गए साहब। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी दर्शक पसंद करते हैं, ओल्ड इज गोल्ड है, ओल्ड इज गोल्ड है। 6 गेंदों का खेल, 6 रन मैच को जीतने के लिए। देखना होगा गेंदबाज कोई चमत्कार करते हैं, क्योंकि क्रिकेट है, 6 गेंदों में 30 रन 25 रन भी बने हैं और ऐसे मैच भी हुए 6 गेंदों में 6 रन भी नहीं बने हैं। ये क्रिकेट है मैदान पर। That is the best form of cricket. Here is a slightly breeze blowing across, which disturbs the bowler, so goes back to his short ball. Vijay trying to pull him, misses. And a dot ball. 5 balls and 6 runs to get. Ganpati Warriors in a tricky situation, slightly tensed. Over pitch, driven, ball in the air. शायद थोड़ा सा गैप में, रन आउट का खतरा और इसी के साथ ये रन आउट।
लेकिन सर मैं रामदास कहूंगा साबियो सर messing it around. कैच था, एक रन भी इस मैच में अब कीमती है, एक वही, एक रन वो भी कीमती है। और बहुत टेंस हो रहा है अभी, और भी टेंस। 4 बॉल बाकी। देखो पिछले मैच में राकेश कोरगांवकर की गेंदबाजी पर कैच छूटा, वहीं पर रन बन गया, और ये कैच भी आपको पकड़ना चाहिए था, क्योंकि आपको ये मैच अब ऐसे मोड़ पर आ चुका है, आपको आपकी पूरी जान की बाजी लगानी पड़ेगी मैदान पर। अभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, 59 रन, 59 रामदास की बल्लेबाजी। Yeah, he brought them back into the game. 8 Ramdas, छक्के, 8 nice six. batting, clean hitting, I would say, with some sheer timing over the top of the bowler of the fielders. Over the 30-yard circle, he played some nice drives into the gaps. 4 balls to come and 5 runs required. Ganpati Warriors in a tricky situation in this second semi-final. Over pitch driven and ricochets of the field. There was a nice stroke coming in, but सर the fielder couldn't get into it, and 2 runs. सर डायरेक्ट हिट होती, विकेट कीपर के हाथों में सीधा थ्रो होता तो रनआउट का Yes, खतरा yes, लगभग yes, था। yes, yes. It was a 3 bad गेंदों का खेल और 3 रन मैच को जीतने के लिए, 3 balls 3 runs। really nail-biting finish here. Ganpati Warriors. Overpitched once again. Oh, and this time Vijay is run out. क्या Trying to मैच go हो for रहा a है? kitchy. Yeah, I told you that this is the beauty of cricket. बिल्कुल, अब मात्र थोड़ी सी दिल की धड़कन तेज हो गई इस मैच के साथ। 2 That's गेंदों का exactly. खेल, और भी tense हुआ. 2 गेंदों का खेल और 3 रन, और मैच में एक एक रन कितना महत्वपूर्ण होता है ये पता इस मैच के साथ। जब बल्लेबाज 99 पर आउट होता है तो 1 रन की कीमत मालूम होती है। एग्जाम में अगर जो कि विद्यार्थी 1 मार्क से अगर फेल होता है तो 1 की कीमत बढ़ जाती है, और Yes. यही मैच यह मैदान पर दिखाई देता हुआ। The batsman who can keep his nerves, the batsman who can keep his nerves at this situation will come out as a victor. So the batsman has to really keep his nerves on, because it's a very tricky and tense situation for the batting side as well. The bowlers will get into you. So 2 balls, 2 legal deliveries and 3 runs to get. Ganpati Warriors. 2 गेंदों का खेल, 3 रन मैच को जीतने के लिए। ये गेंद मैच की गेंद है, ये गेंद मैच की गेंद। ओह शानदार शॉट ऑफ लेन, रन आउट का मौका, नॉट सेकंड एंड पर, भाग मिलका भाग, भाग मिलका भाग, और इसी के साथ और एक कामयाबी। वामन सर, सिराज सर, अगर मैच टाई हो जाता है तो क्या है, सुपर ओवर। और सावे सर हम तो कमेंट्री बॉक्स में उम्मीद करेंगे, Wow. दर्शक It will भी be the उम्मीद first करेंगे। game of the super over. और दर्शक First. भी सोचते होंगे शायद दोपहर का समय है, भोजन का वक्त हो चुका है, भूख भी लगी है, लेकिन दोस्तों सुपर ओवर का मुकाबला हो जाए तो मजा और बढ़ जाएगा इस Yeah, टूर्नामेंट का। right, Ashok ji. It will be a very interesting contest there, really interesting and nail-biting finish. सर क्या मैच रहा। रजत कुडालकर ने बनाए 33 रन, दनेश ने बनाए 45 रन, सामने अगर बल्लेबाजी की बात करें रामदास ने बनाए 59 रन, 38 रन बनाए साहिल ने। लेकिन मैं कहूंगा अगर मैच को जीता दिया तो मैन ऑफ द मैच का दावेदार रहेंगे ये गेंदबाज आखिरी ओवर के। Right. Because he has kept his nerve as a bowler, and in the bargain he has foxed the batsman with the slow ones, with a little off break, leg break. तो लास्ट बॉल 3 रन्स, 2 दर्शक उपस्थित है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मैच है, जरा जोरदार तालियां इस मैच के लिए, सेमीफाइनल के मैच के लिए। आखिरी गेंद और मैच को जीतने के लिए 3 रन, दोनों टीमों को ढेर सारी बधाई इस मैच के साथ, जोरदार तालियों के साथ। Thank you. Oh, viewers.
Over pitch, runs were driven, ball in the air, fielder getting underneath, and what a catch! The catch of the match. वामन सर, क्या मुकाबला रहा? मैं तो कहूंगा विराज के साथ, लेकिन ये हक है विराज का, मैन ऑफ द मैच कौन? लेकिन अगर कमेंट्री बॉक्स में मैं तो कहूंगा महेश गेंदबाज, 6 गेंदों में 6 रन, 6 गेंदों में 20-25 रन बनते हैं। इसके जॉगिंग क्रिकेट टीम ने क्या मुकाबला जीता सर। And what an end to this match. What an end. Meanwhile, the finals will be played sharp at 3:45. Viewers, kindly note the reporting time for both the captains who have won is the first semi-final winners are SK Jogging. So both the captains of the finalists to be played here. I request both the captains to report at 3 p.m. sharp. The finals will be played at 3:45. SK Jogging and amazing cricketers to clash in the finals of this All Goa Panchayat and Municipality level tennis hardball cricket tournament. 3:45 are the finals, and the reporting time for